ओके सो कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज वेरिएशन इन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड, दैट इज विथ हाइट, विथ डेप्थ, with latitude and shape. So as we go at height, some height from the earth surface, acceleration due to gravity की value change होती है, and that is what we want to see how does it vary. So I told you, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, उसको पहले हमने अर्थ की सरफेस पे रखा है, राइट? इट इज इनिशियली केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वी ऑलरेडी नो on the surface of earth acceleration due to gravity g is given by gm by r square, gm by r square, where r is radius of earth. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये याद ही नहीं रहता है कि किसका मास कौन सा आर। तो सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यू ऑलरेडी नो कि अभी यू योरसेल्फ फॉर एग्जांपल, आप अर्थ की सरफेस पे बैठे हो एंड यू फील दैट यू हैव सम वेट। तो वेट ऑफ अ बॉडी इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? वेट ऑफ अ बॉडी इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज मास ऑफ द बॉडी इनटू जी, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे खुद का आपका मास होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन यू एज एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ का सेंटर, दैट इज आर। तो ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो बचा क्या? जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट acceleration due to gravity on the surface of earth is given by g is equal to capital G mass of earth upon radius of earth square। ये surface value है, राइट? अब अगर सिमिलरली अगर मैं एक हाइट पे हूं तो वेट ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट, वेट एट हाइट h, weight at height h is again equal to gravitational force, so force due to gravity, and weight at height h is again mgh, and fg is gmm upon height पे है, h height पे है सरफेस से। हमको सेंटर ऑफ अर्थ से लेके तो जहां पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस लिखना होता है, यहाँ पे हमने लिखा था स्मॉल आर विच इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट, तो स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, वापस हमको मिल गया जी एच इज इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो दिस इज essential for you to know. So action due to gravity at height h is equal to gm by small r square, where small r is r plus h, so that is gm by r plus h squared। ओके, तो सिंपल है। हमको देखना है हाउ डज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज एज यू गो एट हायर अल्टीट्यूड्स। जैसे आप हाइट ऊपर जाओगे वैसे ही जी चेंजेस। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल जस्ट डिवाइड जी एच बाई जी। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, राइट? तो व्हाट वी हैव इज अ सिंपल थिंग। तो जी एच को जी से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। सो इन शॉर्ट आई हैव एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी जी एच एज जी आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ओके, तो this is how g varies as you go at higher altitudes. It is decreasing. How you can say it is decreasing? देखो नीचे जो है r plus h हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग। जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल नंबर छोटा होता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट gh is decreasing. So this equation shows that acceleration due to gravity decreases as you go at higher altitudes. So it is simple thing. Okay, ये इक्वेशन कब यूज करते हैं मैंने कल भी बताया था, मैं अब वापस बता रहा हूँ। यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हाइट of the object from the surface of earth is comparable to radius of the earth। for example r by 10 तक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब भी आप हाइट को r के टर्म्स में लिख सकते हो,
height is comparable to r, only in that case you can use this equation. Otherwise what we can do is, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज, तो जी एच इज इक्वल टू जी, ये जो ऊपर आर है इसको मैं नीचे ले जाऊंगा, तो आर प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर कर देंगे. तो ये आपका बन जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी 1/1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर. तो ये आपका बन जाएगा जी 1/1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर रेज टू -2. ओके, अब इसके आगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करने वाले हैं. मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाला हूं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन अ लॉट ऑफ डिटेल्स ऑफ इट. सो यू जस्ट नीड टू नो वेरी सिंपल थिंग, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी रेज टू n. जैसे आप a प्लस बी रेज टू 2 करते हो, वैसे ही इट इज NC0. इसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चाहिए और NCR का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. NC0 a रेज टू n b रेज टू 0 प्लस NC1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1. a का पावर एक एक से कम होगा, b का पावर एक एक से बढ़ते जाएगा, सो ऑन. कब तक? जब तक आखिरी टर्म में आपके पास NCn a रेज टू 0 b रेज टू n नहीं आता तब तक, राइट. So this is binomial expansion theorem, right? अब important is not that important, जो है मैं आगे बता रहा हूं. अब क्या होता है अगर मैं 1 प्लस बी बाई ए रेज टू माइनस एन लिख रहा हूं, तो इस केस में क्या आएगा? वही एन सी जीरो ए रेज टू एन बी रेज टू 0 प्लस एन सी वन ए रेज टू एन माइनस 1 बी रेज टू 1. ये सब यूज करने के बाद NC0 आता है पहले टर्म में, गुड, बट NC0 इज 1. हाँ, तो पहले टर्म में 1 ही आएगा. प्लस क्या करना, ये माइनस n को यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर देना. तो आपके पास सेकेंड टर्म जो बचेगी वो आपके पास आएगी माइनस एन बी बाई ए, राइट. अभी तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी अगले टर्म्स हैं उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा b बाई ए रेज टू 2, b बाई ए रेज टू 3 और बाकी कुछ फैक्टर्स होंगे साथ में, एंड सो ऑन, है ना. ऐसा कुछ आएगा विद सम फैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा इसका, b बाई ए रेज टू 2 इनटू समथिंग, b बाई ए रेज टू 3 इनटू समथिंग, वो होता रहेगा. इफ b बाई ए इज वेरी वेरी लेस देन 1, मान लेता हूं मैं b बाई ए की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 है, मान लेते हैं. अगर b बाई ए की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 है तो b बाई ए का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4 होगा. b बाई ए का क्यूब 10 पावर माइनस 6 होगा. मतलब मैं हायर ऑर्डर्स ऑफ b बाई ए मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं क्योंकि दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज. तो आपको पता होना चाहिए जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हो, तो यू शुड नो दिस, that under this condition if b by a is very very less than 1, तो आपको सिर्फ पहले दो टर्म ही सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है बेसिकली. बाकी सारे हायर ऑर्डर टर्म दे आर नेग्लिजिबल बिकॉज दे आर गिविंग यू वेरी स्मॉल वैल्यू. दिस इज व्हाट यू शुड नो. तो अब मैं वही एक बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम यूज कर रहा हूं अंडर कंडीशन h by r very very less than 1. मतलब बेसिकली h is very very less than r, ऐसा बोल सकते हो. Height of the object is very less as compared to radius of Earth. For example, height is 10 kilometer, radius is 6,400 kilometer of Earth. तो इस केस में h by r is very very less than 1. तो हम लोग जब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके एक्सपैंड करते हैं to see how acceleration due to gravity varies with height, it is under a strict criteria when h is very very less than r. मतलब h by r is very very less than 1. इस केस में ज्यादा सोचना नहीं, ये 2 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देना सेकेंड टर्म के साथ और बोल देना निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, तो हमको मिल जाएगा g1 minus 2h by r. हाँ, बोल देंगे निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, तो वो हम लोग बोलेंगे जब भी हम नोट्स लिखेंगे. तो आपके पास g के दो फॉर्मूले बन गए, जी एच के, दैट इज g1 minus 2h by r.
ओके, राइट। ये कब यूज होता है? अंडर अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ एच बाई आर वेरी वेरी लेस देन 1। तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, एक है जी एच इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, एक है जी एच इक्वल टू जी 1 - 2h by r. So these are the two equations that give you variation of acceleration due to gravity with altitude. Correct? तो simple था. We will write it down now and make note also. मैंने last lecture में भी ये लिया था. So we are just continuing from that point onwards. Of course, we will be writing down notes also, and I'm gonna use normal pen to write down because there are a lot of equations involved. So I'm not going to type. Sorry for being lazy, but I am not going to do it. So let's consider a body of mass m, a body of mass small m on the surface of Earth, on the surface of Earth. The acceleration due to gravity in this case, the acceleration due to gravity on the Earth's surface, on the Earth's surface is given by, we already know this is G is equal to Gm by R square, and we should know what is M and what is R, where capital M is mass of Earth and R is radius of Earth. Let's say this is equation number 1. Okay, so I don't like this because I want things to be properly oriented. I am sorry, but I am just going to move it here. All right, looks better. This is equation number 1. Okay, good. Then, as I told you, when the body is at height h above the Earth's surface, as shown in figure, the acceleration due to gravity will be when the body is at height h, height h above the surface of Earth, the acceleration due to gravity is given by, the acceleration due to gravity is given by Gh is equal to Gm upon R plus H square, equation number 2. So if I divide equation number 2 by equation number 1, therefore Gh by G is equal to, you just have to write down equations here, Gm upon R plus H square upon Gm upon R square. तो ये आपको मिलेगा R square upon R plus H bracket square. So therefore what you have is Gh upon G is equal to R upon R plus H whole square, right? So you can in fact write it down like, okay, so this is
equal to gh equal to g into r upon r plus h square, equation number 3. So equation 3 gives variation of g with respect to height, and it shows that g goes on decreasing, matlab acceleration due to gravity goes on decreasing with increase in altitude of body above the surface of earth. So this equation shows that the acceleration due to gravity goes on decreasing with increase in altitude of the body above the surface of earth, above the earth's surface. Okay, then we can rewrite equation 3 in different form also. So equation 3 can also be written as, what we can do is gh is equal to g, अभी ऊपर r था तो मैं नीचे ले जाता हूँ r प्लस h बाई आर ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा g 1 plus h by r का स्क्वायर. Therefore what we can have is gh is equal to g 1 plus h by r raised to minus 2. Okay, so r raised to minus 2. Here we are going to use binomial theorem for under the condition h by r very less than 1. So for small altitude, that is h is very less than r, that is h by r very less than 1, we have from binomial expansion. I'm not writing from binomial expansion, I am just writing the final equation, equation number 4, right? Of course we neglected higher order terms since they are very small, so neglecting higher order या फिर higher power terms of h by r, as h by r is very less than 1. ओके, तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4. तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बेसिकली गिव्स यू वेरिएशन ऑफ g विथ अल्टीट्यूड. ओके, तो इजी था, इजी एक्सप्रेशन था, राइट right? तो बहुत इजी है ये, नथिंग, g ऑन द सरफेस, g एट हाइट, दोनों को डिवाइड कर दिया, एक इक्वेशन मिला, उसको सिंप्लीफाई किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया, एंड यू गेट gh इक्वल टू g 1 minus 2h by r. बहुत सिंपल है. जस्ट टू टेल यू कि कौन सा इक्वेशन कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि दो इक्वेशन है 3 और 4. आई विल इमीडिएटली टेक एग्जाम्पल ऑफ इट. सो लेट मी जस्ट copy and paste question over here. All right, so I'm just copying and pasting question here. Right. So as you can see from this question is very simple. At what
distance above at what distance above the surface of Earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface. तो at what distance, तो कितने डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10% से कम होगी, डिक्रीज होगी, राइट? 10% से डिक्रीज होगी, मतलब 90% वैल्यू रहेगी। मतलब अगर डिक्रीज सिर्फ 10% है तो हाइट इज वेरी लेस, है ना? हमको ऑलरेडी पता है कि फॉर एग्जाम्पल जे की वैल्यू 10 ले ली मैंने, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओके, और अभी 9 रह गई, तो 9 रह गई मतलब द डिक्रीज इज ओनली 1, है ना? तो ओनली 10%, मतलब हाइट इज वेरी लेस, क्योंकि बहुत हाइट कम होगा तब जाके डिक्रीज भी कम होगा। सो व्हाट यू कैन से हियर इज जी एच इज इक्वल टू 90% ऑफ जी, है ना? सिंस गिवन में बोला है सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases by 10%, okay, of its surface value, of its surface value. Therefore, you can write down GH by G is equal to 90 by 100, that is 0.9, right? Let's say equation number 1. But we know that अभी अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया है जो इक्वेशन नंबर 4 है, but we know that GH by G is equal to 1 minus 2H by R. इक्वेशन नंबर 4 से आया ये, GH by G is 1 minus 2H by R. 2H by R क्यों लिया मैंने, 1 minus 2H by R क्यों लिया, इक्वेशन 4 क्यों यूज किया, क्योंकि डिक्रीज इज लेस। अगर बोला होता 50% से डिक्रीज हुआ, तो 50% से डिक्रीज हुआ तो मैं इक्वेशन नंबर 3 यूज करता, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज व्हिच इक्वेशन। Okay, so from 1 and 2, from 1 and 2, it is easy. 1 minus 2h by r is 0.9, मतलब 2h by r is 1 minus 0.9, मतलब 0.21, मतलब 2h by r is 1 by 10, इजी है। मतलब इसका मतलब होता है h इज इक्वल टू r by 20, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, बोला है 6400 किलोमीटर बाई 20, मतलब आपको मिल गया h की वैल्यू 320 किलोमीटर। सो द हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ g decreases by 10% of its value at the surface is 320 किलोमीटर। तो बहुत सिंपल है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो बहुत इजी केस है, इट इज एन एक्सट्रीमली सिंपल केस। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड। अब अर्थ से ऊपर जाके देख लिया, अब अर्थ के नीचे जाके देखते हैं कि क्या होता है। सो इन सेकेंड केस वी आर गोइंग टू सी हाउ डज जी वेरी एज यू गो inside the earth। B, variation in G with depth, राइट? तो पहले मैं समझा देता हूं, बहुत इजी केस है ये, इट इज इजी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। देखो ऐसा है, इस केस में हम लोग
जो अर्थ है वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल से बना हुआ है, ऐसा अज्यूम करते हैं। अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ शेल्स। अंदर एक शेल, फिर एक शेल, फिर एक शेल। मैं एक ही शेल दिखा रहा हूँ। आई कैन शो एन नंबर ऑफ शेल्स, है ना, ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो डेंसिटी इज सेम। वैसे इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी अर्थ की सरफेस जो है वो रॉक है, सॉलिड है, उसका डेंसिटी ज्यादा है। जैसे आप अंदर जाओगे तो लावा है, मतलब प्लाज्मा फॉर्म है, मतलब डेंसिटी कम है इन रियलिटी। बट वी अज्यूम कि अर्थ के सरफेस से सेंटर तक डेंसिटी इज सेम। हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं, राइट। अब फ्रॉम सेंटर टू हियर इज रेडियस ऑफ अर्थ। मुझे देखना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। मैं अर्थ के अंदर गया डेप्थ डी पे, तो कितना एक्सेलरेशन है। तो ये जो डिस्टेंस बचेगा, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर माइनस डी, रेडियस माइनस डेप्थ। सिंपल केस, राइट। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल केस। नाउ आपको ये पता होना चाहिए, अभी आप खुद अर्थ के सरफेस पे बैठे हो, तो आप पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द टोटल मास ऑफ अर्थ, है ना। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जी, इट इज जी एम बाय आर स्क्वायर। सो ये कैपिटल एम लिखने का मतलब ये होता है कि आप पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज बिकॉज ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ, बिकॉज यू आर अबव द अर्थ। आप अर्थ के बाहर हो, इसलिए। I want to write this equation in terms of R. I don't want to have mass here. मुझे पता है कि mass is volume into density, और हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अर्थ ये स्पीयर है ऐसा अज्यूम करेंगे। इन रियलिटी अर्थ इज नॉट स्पीयर, वो हम देखेंगे आगे जाके। तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब into rho by r square। मतलब acceleration due to gravity on the surface of earth is 4/3 pi g r rho। करेक्ट। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है। ये हो गया सरफेस वैल्यू ऑन द सरफेस इन टर्म्स ऑफ g r and rho। ओके, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी बेसिकली। अब लेट अस टेक अ पॉइंट हियर। यहाँ पे एक P पॉइंट है जहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ऑफ मास स्मॉल m, लेटर से उस पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो देखना है हमको। तो हम कैसे करेंगे? व्हाट वी कैन डू इन दिस केस इज g at depth d is equal to capital G mass of the earth at that depth d by radius of the earth at that depth d। क्योंकि जब मैं अर्थ के अंदर जा रहा हूं तो अर्थ का पूरा मास की वजह से मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं उस पॉइंट के नीचे कितना मास है, वो मास मुझ पे या ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d विल बी g md अपॉन rd स्क्वायर। So again, I can write down G volume at depth D into density, और डेंसिटी हर जगह पे सेम है ऐसा अजम्पशन करके रखा है, अपॉन आर डी। आर डी मतलब ये डिस्टेंस P पॉइंट से सेंटर तक का, मतलब R माइनस डी का स्क्वायर। देन जी डी इज इक्वल टू जी 4/3 वॉल्यूम पाई R माइनस डी का क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम मैं सिर्फ अंदर के शेल का लूंगा, जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसके नीचे का कितना वॉल्यूम है वो देखा जाएगा, इनटू डेंसिटी अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर।
ये और ये कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो हमको मिल गया accident due to gravity GD at depth D 4 by 3 pi G R minus D into rho, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लूंगा, मतलब मुझे मिल जाएगा जी डी बाई जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो अपॉन 4/3 पाई जी आर रो। 4/3 पाई जी रो कैंसल, 4/3 पाई जी रो कैंसल, मतलब आपके पास आया आर माइनस डी बाई आर, मतलब ये आया 1 माइनस डी बाई आर। ओके, तो आपको मिल गया वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ एज जी 1 माइनस डी बाई आर, राइट। तो एक्सट्रीमली सिंपल केस है। अगेन यू नोटिस वन थिंग, व्हाट यू आर नोटिसिंग हियर इज 1 माइनस डी बाई आर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं जी माइनस जे डी बाई आर, मतलब हम सरफेस वैल्यू में से एक फैक्टर माइनस कर रहे हैं। मतलब ये कि जैसे आप डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होगा, राइट। तो आई एम गोना रिपीट एवरीथिंग अगेन, इजी है, सिर्फ आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट चीजों पे। आई एम गोइंग टू रिपीट एंड देन वी विल राइट इट डाउन एंड देन अगेन दैट विल बी वन मोर रिपीटेशन। तो हाउ डिड वी स्टार्ट दिस टॉपिक, हमको देखना क्या था, हमको देखना था कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, मतलब डेप्थ में जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज कैसे हो रही है, ये हमको देखना था। ओके, गुड। तो पहले तो सरफेस पे क्या वैल्यू है वो देख लिया हमने, जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। हमको पता है मास मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाई आर स्क्वायर, तो है ही वहां पे। तो हमको पता है कि हमने अर्थ को इस केस में एक स्पीयर मान के रखा है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम एज 4/3 पाई आर क्यूब रो बाई आर स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट आई गेट इज जी इज इक्वल टू, जो भी कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 4/3 पाई आर जी रो। This is the value of G on the surface in terms of universal gravitational constant G, in terms of radius of Earth and density of Earth. अब हमको क्या करना है, Now we are going at a depth, हम Earth के अंदर जा रहे हैं। मान लो एक पॉइंट P है जो D डेप्थ पे है, so I'll assume that we have a point P over here at a depth D from the surface of Earth. So acceleration due to gravity acting at this particular point will be given by GD. G mass of the earth at depth D. तो ये जो बाहर का शेल है, इस बाहर के शेल का मास मैं कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेप्थ डी पे है, तो ऑब्जेक्ट से नीचे जितना भी मास है वो लेना पड़ता है, अपॉन ऑब्जेक्ट से नीचे जितना रेडियस है वो लेना पड़ता है, उसका स्क्वायर। आई कैन राइट दिस एज जी volume at depth D into rho by RD square, and RD is already, you know, R minus D squared. So you will have acceleration to gravity GD at depth D as G volume is 4/3 pi R cube, R minus D cube into rho divided by R minus D का R minus D का square. Good, we are good. So we have acceleration due to gravity at depth D as 4/3 pi R minus D into G into rho, equation number 2, equation number 1. Right. So अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली तो कंपेयर करना था ना, तो हम डिवाइड कर लेंगे।
So dividing these two, I get GD by G. Everything else will cancel out except for R minus D by R. So I can write it as 1 minus D by R. So GD, matlab acceleration due to gravity at depth D is G 1 minus D by R. So what do we notice here? It's simple. We notice that the value of G is decreasing as you go below. तो ऊपर जाओ तो कम, नीचे जाओ तो कम, मतलब सरफेस पे मैक्सिमम होगा, पर सरफेस पे कहाँ पे मैक्सिमम होगा ये नेक्स्ट टॉपिक है, right? So the value of G is maximum on the surface of Earth, but where on the surface of Earth? On equator, on pole, in Dhule, in Mumbai, वो देखेंगे बाद में हम लोग. So at this point of time, you just need to understand that if you're going above the surface of Earth, G value is decreasing. If you are going in depth below the surface of Earth, it is again decreasing, right? So what we will do now is make notes, because that is what we should do. Okay, so I have to specify a point P over here, and then I need to shift this over here, right? So we'll start with writing down basic things. मैंने क्या क्या बताया था? एक, हम अर्थ को इमेजिन कर रहे हैं कि it is made up of number of spherical shells with uniform density, right? Okay, so total mass of earth is basically just the combined mass. मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं लिखूंगा इसको, हम इसको बहुत सिंपल तरीके से लिखने वाले हैं. आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो व्हाट योर टेक्स्ट बुक सेज. सो let us assume, consider the earth to be made up of number of shells of uniform density the total mass of earth is the addition of mass of all these shells. The total mass of earth is the sum of all sum of masses of all the shells, sum of masses of all the shells, right? इसके बाद हमको पता है कि हम जब सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे तो टोटल मास कंसीडर करेंगे, राइट? सो व्हेन an object is on the surface of earth is on the surface of the earth, it experiences gravitational force, it experiences gravitational force as if the entire mass of the earth is concentrated at its center, as if the entire mass is concentrated at its center. Therefore, acceleration due to gravity on the surface of earth is given by acceleration due to gravity on the surface of earth is given by.
You already know it is G is equal to G m by r square. Treating or assuming the Earth to be a sphere of uniform density, assuming the Earth to be a sphere of uniform density, we can write mass m is equal to volume into density, and volume is 4 by 3 pi r cube, equation number 2. So substituting value of m, not value, but equation of m. So substituting 2 in 1, you have G is equal to G 4 by 3 pi r cube into rho. I missed a row here, by r square. So you will have the value of G to be equal to, so you will have a value of G to be equal to 4 by 3 pi G r rho. Equation number, let me write it here, G is equal to 4 by 3 pi G r rho, equation number 3, right? तो ये आ गया G का वैल्यू in terms of r rho G on the surface, right? Then let us consider a point P at a depth d from the surface of Earth. Consider a point P at a depth d below the surface of Earth. The acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity at this point will be due to a sphere of mass md of of radius rd, which is r minus d. Therefore acceleration due to gravity at depth d is given by, therefore acceleration due to gravity at depth d is given by G of d is equal to G mass at depth d divided by radius at depth d ka square, which is G mass at depth d is volume at depth d into rho by r d square. If you want, you can write down Vd is volume at depth d. I don't feel any need of doing it, so मैं नहीं करने वाला. Gd is equal to G 4 by 3 pi r cube, but r कहाँ पे, depth पे, into rho upon r d square, which is equal to 4 by 3 pi g r d rho. Therefore acceleration due to gravity at depth d is equal to 4 by 3 pi g r d is r minus d rho. ओके, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4.
Right, I'll write it here. But RD is R minus D, equation number 4, right? So it's pretty simple thing. अब हम लोग इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर लेंगे. So dividing equation 4 by equation 3, we have GD by G is equal to 4 by 3 by 3 pi G R minus D rho 4 by 3 pi G R rho, which is R minus D by R. Therefore, GD is equal to, इसको भी लिख देता हूं मैं, 1 minus D by R. It is extremely simple thing. Okay. Therefore, GD is G1 minus D by R, equation number 5. So equation number 5 gives variation in G with depth D, and which shows that acceleration due to gravity at depth D below Earth decreases. Okay, so equation 5 gives variation in G with depth D, and it shows that acceleration due to gravity decreases with depth. Decreases with depth. Right. So it was easy. अब इसके हमको कुछ स्पेशल केसेस देखने हैं और हमको फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखना है हाउ जी वेरीज विथ लैटिट्यूड, मतलब इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो क्या होगा, एट सम पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी, ये देखना है. एंड वी विल आल्सो कंसीडर if it is in your book, we will also consider how does G varies with shape of earth. Okay, for today it is sufficient because we don't have that much of time to cover next topic, right? So it is sufficient.